Hello students, मैं BL Sharma, Maths Sub. Today in this class, I will discuss with you that how to find out the mean by assumed mean method. This is in continuation of the chapter Statistics of class 10th Mathematics, and this is our fifth part. So please, before watching this, you also have to watch part 1, part 2, part 3, and part 4 for clear understanding. So let us begin without wasting our time. Yes, this is the first question on your screen. In this question, the question is same, is find out the mean of the following data, but now we have to find out the mean by assumed mean method. Previously, we got the mean by direct method, so the process is almost same. So first of all, we write here the class as usual, that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. This is given in our question. And their corresponding frequencies are, this is 3, 5, 9, 5, and 3. Now we also have to find out the class mark as usual. So xi is the class mark. Class mark means lower limit plus upper limit divided by 2. So 0 plus 10, 10 divided by 2, this is 5. 10 plus 20, 30 divided by 2, that is 15. 20 plus 30, 50 divided by 2, that is 25. 30 plus 40, 70 divided by 2, this is 35. 40 plus 50, 90, and you divide by 2, that will be 45. So here up to here the process is same. यहाँ तक direct method और assumed mean method में process same ही है. Means आपको class mark तो दोनों ही method में find out करना होता है. Now in direct means in assumed mean method हमें कोई एक mean है जो assume करना पड़ता है, suppose करना पड़ता है, और ये हमें इस class mark में suppose करना पड़ता है, frequency में नहीं. तो कोई भी आपको लगे कि कोई बीचों बीच वाला, आप कोशिश ये करिए कि जो मिडिल मोस्ट वाला है उसको आप assumed mean करें. So here I am writing the assumed mean is I am taking here let 25. So right here assumed mean is 25. That is what? This is assumed mean. ये हमारा actual mean नहीं है, हमने एक mean अब सपोज कर लिया है. इस assumed mean मेथड से हमें अब मींस राइट मीन को, करेक्ट मीन को फाइंड आउट करना है. So next column you find out, you write here di. Actually di is xi minus a. Means how to write? Let write here x, all write x, that is 5, 50, 25, 35 and 45. यहाँ से हमें a को assumed mean को subtract कर देना है. The assumed mean is 25, so subtract 25. That is also 25 minus 25 minus 25 minus 25. Then you will get here, that is 25 minus 25 is 0. 15 minus 25 is minus 10. 5 minus 25 is minus 20. 35 minus 25 plus 10. And 45 minus 25, that is 20. Now one more column is required here, and that is fi into di. पहले हम करते थे डायरेक्ट मीन मेथड में fi into xi, और यहाँ हमें करना होगा fi into di. Means multiply this f by this d.
please don't multiply AXI because most of the time what you do, F और X बहुत नजदीक होते हैं तो आपको पता नहीं चलता, और you multiply DI by XI. Please don't do this. You multiply DI by FI only, means frequency को multiply करना होगा. तो देखिए, then you can write here that is minus 20 into 3, that is minus 60. 5 into minus 10, that is minus 50. 9 into 0, that is 0. 5 into 10, that is plus 50. 3 into 20, that is plus 60. As usual, then we got the sum of all frequencies, because this is the formula for the mean for the assumed mean method. Mean is equal to A plus total Fi di divided by total Fi. So here the sum of all frequencies 3 plus 5 plus 9 plus 5 plus 3, that is 25. And here also we have to find out the sum of total Fi to di, minus 60 minus 50 plus 50 plus 60, and this will be 0. आप इन सबको ऐड करके देखिए, minus 60 plus minus 50 plus 0 plus 50 plus 60 minus 110 and plus 110 cancel, and this is 0. Now we have to put these values in the formula. So X bar means the mean is equal to A, this assumed mean, that is total Fi di upon total Fi. Here assumed mean we have taken, that is 25. See here, what is our A, what is assumed mean? We have assumed here 25, right here 25. Then total Fi di, that is 0, and total Fi, that is 25. So that is 25 plus 0, that is 25 answer. So the mean of the given data is 25. We are using here assumed mean method, students. So please write clearly in your notebook. Yes, और इसकी आप practice भी करिएगा. Some of the students say if it is not necessary that all the time it is the middle value of xi, there may be, can we choose, can we assume that the 35 or 45, क्या हमें ये 5, 15, 25, 35 और 45 में क्या 25 ही assumed mean करना जरूरी है? I say no. You can take 35 assumed mean, लेकिन अगर आप मिडिल वाला को चूज करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी. I think you have got it. तो अब हम क्या करेंगे? I am taking the same question but changing here the middle means the assumed mean here. Right? So the same question is here, and now take we take the assumed mean different. So we can write the class interval as it is, then the frequency as it is, then class mark, then di, then fi into di, that is 0 to 10. स्टूडेंट देखिए वो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम assumed mean को चेंज करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या आंसर हमारा सेम ही आता है. तो 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Corresponding frequencies are 3, 5, 9, 5, 3. Yes. And what is the class mark? As we already have done, 0 plus 10, 10 divided by 2, that is 5. 10 plus 20, 30 divided by 2, that is 15. 20 plus 30, 50 divided by 2, that is 25. 30 plus 40, 70 divided by 2, that is 35. 40 plus 50, 90 divided by 2, that is 45.
अब हमें यहाँ पे अज्यूम्ड मीन करना है, और अज्यूम्ड मीन हमेशा ही xi में करते हैं, fi में नहीं करते। ध्यान रखा, फ्रीक्वेंसी में कभी मीन नहीं आता है, मीन आएगा हमारा x में से। सो लेट सपोज वी आर टेकिंग अज्यूम्ड मीन एज 35। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखिए 25 को अज्यूम किया था। अब हम इसमें अज्यूम करते हैं 35 को और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखिए, सो वी राइट हियर द अज्यूम्ड मीन दैट इज 35. What is di? That is xi minus a. xi minus a, तो पहले हम xi लिख देते हैं 5, 15, 25, 35, 45 एज इट इज। ये हमने एज इट लिखा, और अब इसमें से हमें a को सब्ट्रैक्ट कर देना है। What is a? The a is already we have taken, that is 35. So you subtract here 35. 35 minus 35, this is also 35 and this is 35. ये हमारा 0 आएगा, then it will be minus 10, it will be minus 20 and it will be minus 30 and this will be plus 10. आपको चाहिए कि आप इसको डायरेक्ट भी कर ले, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 माइनस 35 और 25 माइनस 35 और 15 माइनस 35। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो डी आई को डायरेक्टली यू कैन राइट माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0 एंड 10। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द प्रैक्टिस यू हैव टू राइट दिस फर्स्ट, ओके। Then our next column is you multiply carefully fi into di. You multiply, this is the value of di and this is fi. फिर मैं बोलूंगा आपसे कि इस di को xi से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, प्लीज मल्टीप्लाई बाय corresponding frequency only. So minus 30, minus 30 into 3, that is minus 9. 3 into minus 30 minus 90, 5 into minus 20, that is minus 100, and then 9 into minus 10, that is minus 90, 5 into 0, that is 0, 3 into 10, that is 30. Okay, then we find out the sum of all frequencies. Again, add the number of frequencies: 3 plus 5, 8, plus 9, 17, plus 5, 22, plus 3, 25. And sum of all means fi into di, that is minus 90 plus 100, minus 190, minus 90, minus 290, plus 30, that is minus 250. Now using the formula, this is the formula for assumed mean method. आपने पहले fi find out किया, total sum of all the frequencies find out किया, और फिर sum of all the means the product of the di and corresponding frequency को multiply किया, और उनको sum आपने find out किया. Now you just have to put in the formula only and get answer. So writing the formula here now, yes, x bar means mean, that is a plus total of f and d, total of frequency. You can write what is a here. A is 35, so write here 35 plus minus 250 upon 25. On further writing, you can write here further. This is 35 plus minus 10. 25 10 means 250. So 35 minus 10, that is 25 answer. So this is the way how to find out the mean using assumed mean method. इस तरीके से हम assumed mean method से find out कर सकते हैं. स्टूडेंट जब हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की ज्यादा वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू हो, तब इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं. इससे हमारी कैलकुलेशन आसान
हो जाती है. That is why we are applying here means assumed mean method. See, क्या हमारा आंसर assumed mean चेंज करने से कोई चेंज हुआ? नहीं, because the answer is 25 when we assume the mean 35, and in first part we choose the assumed mean 25, then also the assumed mean, sorry, the mean is 25. तो आपने देखा कि assumed mean को चेंज करने से, डिफरेंट लेने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जनरली व्हाट यू शुड डू, आपको बीच वाला, मिडिल वाला ही क्लास मार्क में से कोई एक को आपको अज्यूम्ड मीन लेना चाहिए. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव गॉट हाउ टू फाइंड आउट. यस, बाय how to find out the mean by assumed mean method. I am taking one more example for you, and please see this example. Yes, यहाँ पे थोड़ी सी values बड़ी हैं frequencies की, लेकिन no problem at all. And we have to find out the mean by assumed mean method. लेकिन first of all, we write here the classes, all the classes. Right here class. आप मेरे साथ में practice करिए. देखिए, this is class, then this is corresponding frequency, and that is class mark, and that is di minus x I minus a, and then last is fi di. ये कॉलम आप पहले से बना लें. Classes are 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80. आपको चाहिए कि जब जब आपको लगे कि मेरी स्पीड फास्ट है, तो वीडियो को आप पॉज करें और अपनी नोटबुक में लिखें. जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके समझ में नहीं आएगा. ओके, corresponding frequencies, it is already given in the question. That is 80. देखो कितनी लार्ज है. That, and this is 110. This is 120. This is 70, and this is 40. Yeah, it is already given 80, 110, 120, 70, and 40. Our next step will, we have to find out the class mark. Class mark तो आपको मैं बता चुका हूँ. क्या करते हैं class mark के लिए? Lower limit plus upper limit divided by 2. So 30 is the lower limit, 40 is upper limit of the first class, divided by 2. That is 70 divided by 2. This is 35. So you write here 35. Similarly, 40 plus 50, 90, lower limit plus upper limit divided by 2, and 90 by 2, this will be 45. Then for the third class, 50 plus 60, 110. 110 divided by 2, this will be 55. For the next class, 60 plus 70, 130 divided by 2, this will be 65. Then 70 plus 80, 150, 150 divided by 2, that is 750. आपको चाहिए कि आप एक रफ कॉलम में इनको यूज करें, और एक ध्यान ये भी रखिए कि ये जो फर्स्ट क्लास है उसका क्लास मार्क रख लें, और इसका जो भी क्लास साइज है उसमें ऐड करते जाएं. व्हाट इज द क्लास साइज हियर? इट इज 10. So 35 plus 45 plus 10 55 plus 10 65 plus 10 75. जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. Now our next task is to select assumed mean. कोई assumed mean आपको select करना है, वो भी किसमें से? क्लास मार्क में से, फ्रीक्वेंसी में से नहीं. तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बीच में ये आ रहा है, तो can I select here? Can I write here? Let assumed mean is 55. That is what? This is assumed mean. ये हमारा करेक्ट मीन नहीं है, assumed mean है. Now, as I told you, how to find out the DI. DI means XI minus A. So you write here 35, 45, 55,
65 7 xi को एज इट इज लिखा आपने. देन व्हाट इज a? a इज 55. सब में से 55 को आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा. This is minus 55, this is 55, this is also 55, this is 55, and this is also 55. That difference we will be getting here. यहां से आप शुरू करें. देखिए यहां वाला ये होएगा 0, 55 minus 55 0, 45 minus 55 that is minus 10, 35 minus 55 that is minus 20. जो हमने assumed में लिया है उसके ऊपर की तरफ जो भी वैल्यूज आएंगी डी की वो नेगेटिव आएंगी और उसके नीचे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे. 65 minus 55 that is 10, 75 minus 55 that is 20. आपने देखा कि 0 के ऊपर -10 -20 आ रहा है, नीचे आ रहा है +10 +20. जो ऊपर जो वैल्यूज आएंगी वो नीचे आएंगी. डिफरेंस ये है कि ऊपर की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी. नाउ फॉर द नेक्स्ट कॉलम we have to multiply fi by di. fi is this, di is this. स्टूडेंट मैंने पहले भी कहा क्योंकि xi और fi बहुत नजदीक होते हैं तो यू डोंट मल्टीप्लाई di by xi, you please multiply by fi. So here 80 minus 20, 80 minus 20, this is 80 minus 20 that is minus 1600. रफ कॉलम यूज करिए, थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए. Then 110 divided by minus 10 that is minus 1100. Then 120 into 0, this is 0. 120 into 0 that is 0. Then 70 into 10, this is 700. Then 40 into 20, this is 800. Now our next task is to add all the frequencies. Means we need total frequencies, that is total fi. You add all these numbers. 80 plus 110 plus 120 plus 70 plus 40, this is 420. Students please add carefully. अगर आपने ढंग से इसको ऐड नहीं किया और wrong ऐड कर दिया तो पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे. And what is the sum of all fi and di? Minus 1600 minus 1100 plus 700 plus 800, and its sum is minus 1200. प्लीज ऐड केयरफुली. रफ कॉलम लीजिए, ढंग से ऐड करिए. आपकी जल्दबाजी आपके मार्क्स को खो सकती है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. नाउ we have got this total fi, we have got total fi di, and we also have a. फॉर्मूला में यही तो चाहिए हमें. We need mean is equal to here the assumed mean plus total fi di upon total fi. ये जो सिंबल होता है ये सिग्मा है, इसको हम, ये सिंबल होता है टोटल का, सम का. ओके, नाउ we put the values here. First write down the formula. एग्जाम में आप प्लीज डोंट फॉरगेट राइटिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं तो आप लिखना चाहिए. नाउ the mean, this is the symbol is xi, a plus total fi di upon total fi. ये इसी से डिवाइड होता है. Yes, so what is a? A is 55, so write here 55 plus minus 1200 upon 420. Please calculate yourself, try to solve yourself and match with my answer. आप देखो आपसे कितनी गलती होती है कि आप इसको accurately find out कर पाते हैं. Yes, write 55 as it is. Then you can divide by 420, 0 cancelled by 0. That is minus 120 by 42. Further, बहुत सावधानी से आप सोल्व करिएगा. Yes, 55 minus 120 by 42, so that is 55 minus 20 by 7.
that is 55, 20 by 7, that is approximately 2.85. And when you subtract, it is 52.15, and you can write approximate, and this is answer. So the mean of the given data is 52.15 approximately. जब ये accurate नहीं होता, जब ये repeating decimal होता है, in that case we find out the answer up to 2 decimal places, और उसके bracket में हमें लिख देना चाहिए approximately. So this is the way how to find out, how to calculate the mean by assumed mean method. This is the method. You can also check the method here. Yes. कि पहले हमने क्या किया, और स्टूडेंट्स अब इस सेम क्वेश्चन में हम अज्यूम्ड मीन भी चेक करके देखेंगे. यहाँ पे हमने लिया था 55, लेकिन आई एम टेकिंग सेम क्वेश्चन बट क्वेश्चन नंबर 2, बट then I will be changing the assumed mean, or then we will see that is the answer still correct or not correct. क्या आंसर वही आएगा जो इस आंसर में आया था अगर हम assumed mean को चेंज कर देते हैं, राइट? आपको चाहिए कि अगर स्पीड फास्ट है तो इसकी आप स्पीड को स्लो करें, या आप इसको थोड़ा सा पॉज करके और उसको ढंग से देखिए, करेक्ट करके आप इसको देखना चाहिए. ओके, नाउ द सेम प्रोसेस, द क्लास सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें assumed mean को चेंज करके देख रहे हैं. क्लास दैट इज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. सारे कॉलम पहले से ही बना लें. di that is xi minus a, then fi into di. Frequency is already given, that is 80, 110, 120, 70, 40. इसका सम आप पहले से ही फाइंड आउट करके रखिए, और इसका सम है 420. And now the mid value means class mark is 30 plus 40, 70 by 2, that is 35. And this is 45, 55, 65 and 75. Okay. अब हमें यहाँ पे assumed mean, let assumed mean A is 65. पहले हमने सेम क्वेश्चन को किया था तो हमने assumed mean लिया था यहाँ पे 55. अब मैं assumed mean चेंज करके देखता हूँ कि क्या हमारा आंसर सेम ही रहता है. बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि अगर हमने कोई दूसरा ले लिया assumed mean तो क्या हमारे आंसर पे फर्क पड़ेगा. मैं कहता हूँ नहीं पड़ेगा, और we have taken the same question here. So I have taken here 65 as assumed mean. Right here assumed mean is 65. Okay, this is assumed mean. Yes. di is equal to xi minus a. xi आप पहले से लिख दें. अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा. यहाँ पे I am writing here 35, 45, 55, 65, 75, and subtract assumed mean. यहाँ से आप शुरू करें. -65, -65, -65, -65, -65. आप देखेंगे कि जो इनका डिफरेंस है, difference that is 0. 65 minus 65, 0. That is minus 10, minus 20, minus 30 and plus 10. जो आपने assumed mean लिया था उसके नीचे की तरफ प्लस और उसके ऊपर की तरफ नेगेटिव वैल्यू आएंगी. Okay, then you multiply fi into di, this column. What is fi into di? So
Here we can see this is Fi and this is Di. Okay, so 80 into minus 30. 80 into minus 30, that is minus 2400. Okay. For the second, 110 minus 20, that is minus 220. Okay. Then 120 into minus 10, that is minus 1200. Then 70 into 0, this is 0. Then 40 into 10, that is 400. अब इन सबको आपको ऐड कर देना है बहुत सावधानी से। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जो सम है वो सही फाइंड आउट करेंगे। आप चेक करें अपने आप को कि आपसे आंसर सही आ पाता है। minus 2400 minus 2200 minus 1200 plus 400, it will be minus 5400, right? You have got the sum of all frequencies, you have got the sum of all the product of f and d, and then you apply the formula for the assumed mean method. That is the formula for this, and apply the formula here, student. See here, mean is equal to A plus total Fi upon total Fi. What is A? 65 plus minus 5400 upon 420. That is 65 on cancellation, 0 cancel by 0. That is minus 540 upon 42. On further simplification, it is 65 minus 90 by 7 divided by 6. That is 65 minus 12.85, 12.85 approx. And when you subtract 65 minus 12.85, it is 52.15 answer. Yes. So when we change the assumed mean, we get the same value. यहाँ पे हमारा आंसर है 52.15. Right here approx also. Yes. अब हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा आंसर अज्यूम्ड मीन चेंज करने से सेम ही आ रहा है। देखिए ये है हमारा यहाँ से 52.15 और सेम क्वेश्चन का पहले हमने किया था वो भी था 52.15, लेकिन डिफरेंस देखिए, अगर हमने ये मिडिल वैल्यू लिया है यहाँ पे तो हमें आंसर में हमें कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, इट बिकम्स इजी। बट इफ यू चेंज दिस वन, आपने अगर ये नीचे वाला चेंज कर लिया तो आंसर विल बी सेम, बट आवर कैलकुलेशन हैज बिकम डिफिकल्ट नाउ। So please try to select or choose the middle of the class mark for the assumed mean. I think, student, this is very much clear to you now how to find out the mean by assumed mean method. The formula is with you. That is, mean is equal to A stands for assumed mean method, assumed mean, then total Fi into Di divided by total Fi, right? और आपने ये भी देखा कि हमने कैसे x से मींस xi से हमने bi को फाइंड आउट किया। आपको सिंपली xi में से assumed mean को सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट? सो आई थिंक that's all for the class. Thank you. Please keep watching.
Next class will be how to find out the mode of the given data. Please keep on watching and practice. इन्हीं questions को आप नोटबुक में लिखिए और आप अपने मन से दोबारा कीजिएगा। देखिएगा कि क्या आपके आंसर स्लिप होता है, चेंज होता है, आंसर सेम होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए प्लीज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।